To find least count, of your vernier calipers. One of the important area in the units and dimensions and errors and experiments. It is also called as of your slide calipers. It is also called as what? Slide calipers. So to find the least count of your vernier calipers, giving you a small trick here right now, see. Least count will be equal to T divided by V into your main scale. Isn't it? Least count is equals to D divided by V into your main scale. This is the small short trick which I'm using to do the problems of calculation of least count. What is the D here, beta? D will be representing the difference of vernier calipers. Difference of your vernier scale divisions and as well as of your main scale division. Okay, I'll give you an example how to use this one also. So what is the D represents me, beta? Difference of your vernier scale division and also the main scale division. And V represents me the vernier scale division. Vernier scale division. Done? Chalo. I'm giving a small question. See, everyone try to do it out. Like say for example, I got a vernier scale or a vernier caliper, you can say, which has 1 mm mark on the main scale. Done? And I say that it has 20 equal divisions. It has 20 equal divisions on vernier scale, or I can say on your vernier scale. Okay, and which matches with 16 main scale divisions. 16 main scale division for this vernier scale, or I can say vernier caliper. Okay, so the least count is how much? I'll tell you both the methods which generally you use and the trick also. So first try to read the question carefully and see what exactly is the data given. What you are trying to learn, how to find out the least count of your vernier scale, which is also called as of your slide calipers. I'm saying you that use the formula least count is equals to D divided by V into main scale. D is the difference of the vernier scale division and as well as of your main scale division, and V stands for your vernier scale division. Am I clear? Now the question says here, see, we got a vernier caliper which has 1 mm mark on the main scale and it has 20 equal divisions on the vernier scale which matches with 16 main scale divisions. Okay, for this vernier calipers, the least count will be equal to how much? Now, if you remember the trick, we can do it like say difference between D is nothing but what for me? Difference between vernier scale and main scale. So how many divisions are there on vernier scale, beta? 20. And which matches how many scales, beta? 16. So this 20 minus of a 16 will give me the D, beta. So D will be equal to how much for me? D will be equal to your 20 minus 16. 20 minus 16, that will be equal to 4 mm. Isn't it? Or whatever the units, if you ask, the units are not given, so directly I'll take it as of your 4. Isn't it? And what will be the V here? V is your vernier scale division. How many vernier scale divisions, beta? 20. So it is your 20 main scale reading. This is your 20 main scale reading. That is how much for me? 1 mm each. Isn't it? Now use the least count formula. Least count will be equal to how much for me? But least count will be equal to
D is how much for me? 4 divided by V value is how much for me? 20 into what is the main scale reading beta? 1 mm. So that will be equal to how much for me? 1 divided by 5, isn't it? So 1 by 5 mm, that will be equal to 0.2 mm. Isn't it not easy? अगर जनरली आप लोग कैसा करते हैं मैं बताता हूँ। देखो, अगर आप होते जनरल मेथड आप क्या करते बेसिकली जनरली व्हाट स्टूडेंट्स डू इज पहले लिखते सर 20 वर्नियर स्केल डिवीजन मस्ट बी इक्वल टू 10 मेन स्केल डिवीजन लिखते। उसके बाद हम लोग इससे 1 VSD निकालते जनरल मेथड 1 VSD इज इक्वल्स टू 16/20 MSD लिखते। उसके बाद हम लोग लीस्ट काउंट का फॉर्मूला लगाते लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू 1 MSD minus of 1 VSD. This is the main formula. So that will be equal to 1 main scale division minus 1 vernier scale मतलब 16/20 MSD लिखते, isn't it? So that is equals to 1 minus 16/20 कितना आ रहा है देखिए 20 minus 16 4 divided by 20 होता, so it is 4 MSD आता 4/20 MSD. That means that will be equal to 1 by 5 MSD. वही आया ना कि नहीं? यानी 1 MSD is equals to how much? 1 MSD is equals to 1 mm. That is given in the problem, isn't it? So I can say that this value will be equal to 1 by 5 into 1 mm. And that will be equal to how much for me? 0.2 mm. कितना time consuming हो रहा है? I hope that you have got an idea how to do such type of equations in the shortcut method. तो क्या फॉर्मूला यूज कर रहे थे? लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू योर D by V into your main scale. D represents the divisions of vernier scale and main scale division, and V represents me the vernier scale division. Am I clear with this one? Any doubt to anyone? आ गया? लिख लीजिए बेटा, नोट्स भेजना मेरे से होता है या ना होता मुझे पता नहीं है, प्लीज ट्राई टू राइट इट आउट। क्लियर है बेटा? चलिए एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, कर लीजिए बेसिकली, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आपको इजी हो जाता बाद में याद करने के लिए। ठीक है चलिए। और एक है जो वेरी इंपॉर्टेंट एरिया होता है, दैट इज रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल्स ऑफ योर सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है ना? फर्स्ट हेडिंग देख लीजिए बेटा, ट्राई टू रिमेंबर द वर्ड नॉवेल। नॉवेल याद रहता है ना आपको? नॉवेल पढ़ते हैं बोलते हैं ना, सो नॉवेल इसका मतलब नो जीरोस, नो जीरोस वैलिड एग्जैक्टली लेफ्ट, ठीक है ना? जीरोस एग्जैक्टली जो लेफ्ट में रहेंगे दैट विल बी ऑफ नो वैल्यू, इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, दैट इज नोन एज ऑफ योर नॉवेल। जस्ट ट्राई टू रिमेंबर द वर्ड नॉवेल। उसी तरह से
ट्राई टू रिमेंबर द वर्ड कोरोना। जैसे 2 साल अपने को सताया था, उसको याद रखने की कोशिश कर लीजिए। कोरोना मीन्स राइट नाउ व्हाट यू डू इज सी मीन्स काउंटिंग ऑफ, वो मीन्स ऑफ, आर मीन्स राइट, काउंटिंग ऑफ राइट ऑफ zeros, zeros not allowed, n मतलब not, a मतलब allowed, काउंटिंग ऑफ राइट zeros और not allowed, ठीक है ना। उसके बाद कोविड, ट्राई टू रिमेंबर द वर्ड कोविड, इसका मतलब काउंटिंग ऑफ zeros, counting of zeros, valid, valid if there is a decimal, very important, very important, ठीक है ना। नॉवेल, कोरोना, कोविड। नॉवेल मतलब एनवो मतलब नो, वी मतलब वैलिड, ई मतलब एग्जैक्टली टू द, एल मतलब लेफ्ट। कोरोना मतलब काउंटिंग ऑफ द राइट ऑफ zeros और नॉट अलाउड। कोविड मतलब काउंटिंग ऑफ zeros वैलिड इफ देयर इज अ डेसिमल। am I clear with this one? एग्जांपल देता हूं, छोड़ो, ट्राई टू डू दिस वन बाय यूजिंग दिस ट्रिक। मान के चलो मेरे पास पॉइंट, और नहीं तो फर्स्ट वन ले लेता हूं, बेसिकली फर्स्ट वन, सॉरी, या एग्जांपल नंबर 1, लाइक 00256, कितने सिग्निफिकेंट फिगर से बताइए। zeros valid exactly, no zeros are valid exactly towards the left। फर्स्ट पॉइंट 00256 कितने सिग्निफिकेंट फिगर से बेटा, how many significant figures, 3, very good, that will be equal to 3, done। डन बेटा, वेरी गुड। चलो और इसका आंसर बताइए। 0.0024 अगर दिया तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बताइए जल्दी से। सिग्निफिकेंट फिगर्स, फर्स्ट रूल यूज होगा, फोर सर करते कैसा बेटा, मैंने फर्स्ट रूल देखो, नो जीरोस वैलिड एग्जैक्टली लेफ्ट, कितने हो जाएंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, वेरी गुड। चलिए और एक एग्जांपल दो, चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए। 4500 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। काउंटिंग ऑफ राइट जीरोस आर नॉट अलाउड, राइट में जितने भी जीरोस रहेंगे, जीरो जो भी नॉन जीरो डिजिट के पहले रहेंगे, दे विल बी नॉट सिग्निफिकेंट। 4500 कितने सिग्निफिकेंट रहेंगे बेटा, वेरी गुड, इट शुड बी इक्वल टू 2। तो बताइए 24.0500 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। So in case of decimals, I told you, last decimals, whatever you write it out, there will be a significant for that one. ये पॉइंट है। थर्ड वन कोविड याद रख लीजिए, काउंटिंग ऑफ जीरोस वैलिड इफ डेसिमल इज बीन प्रेजेंटेड। 24 के बाद अपने को डेसिमल आया हुआ है, उसके बाद जितने भी जीरोस रहेंगे दे विल बी काउंटेबल, दे विल बी और काउंटेबल। The number of significant figures, very good. How many of you are giving the answer 6? The all of them are correct. आया बेटा सभी को, 6 will be the significant figures.
Clear as we go? लिख लीजिए बेटा 3 points. Clear? चलिए और एक देखिए बेटा जो बढ़िया क्वेश्चन बता रहा हूँ, डायमेंशनल एनालिसिस कैसे यूज करते हैं अपन डायमेंशनल एनालिसिस यूज करने के लिए। एक क्वेश्चन आपने कैनेमेटिक्स में किया होगा, जस्ट सी दिस क्वेश्चन। बॉडी इज थ्रोन vertically upward, okay, from the top of a tower, from the top of a tower with certain velocity, if reaches ground in time t1. Now it is thrown downward. It is now thrown downward from the top with same initial velocity or speed, I can say. The same initial speed. It reaches the ground. It reaches the ground in time t2. Okay. Now question is, how much time will it take to reach ground? Will it take to reach the ground if just released from the top? Just released from the top. This is the question. First option is t is equals to under root of t1 into t2. Second option is t is equals to under root of your t1 divided by t2. Third option is t is equals to under root of your 4 t2 square divided by t1. And fourth option is t is equals to under root of t2 square divided by 4 times of your t1 square. चलो बताइए. I'm doing with the dimensional analysis, beta. Isn't it? So body is thrown vertically upwards from the top of a tower with a certain velocity. If reaches the ground with the time t1, now it is being thrown downward from the top with the same initial speed and reaches the ground in time t2. How much time will it take to reach the ground if just released from the top? अगर मैं डायमेंशनल मेथड से करता, we have to just find the time ना बेटा. अपने को निकालना क्या है? टाइम. यानी आप कोई भी एक फोर्थ इक्वेशंस में, 4 ऑप्शंस में से ऐसा इक्वेशन होना चाहिए जो LHS मस्ट बी इक्वल टू RHS, यानी टाइम का डायमेंशन है. सी द फर्स्ट वन बेटा, t is equals to under root of t1 into t2 ना, so that is equals to dimension of the time is capital T into capital T, that is equals to t. So small t is equals to t, isn't it? LHS must be equal to RHS, then that only will give me the time na beta, isn't it? So remaining all C, you are not getting any dimensions which are exactly equal to your time there right now. Isn't it clear? Am I clear with this one?
isn't it? वो ज्यादा काइनेमेटिक्स लगाने का झंझट ही नहीं है। अगर जनरल मेथड से आप करते तो आप लोग ऑलरेडी आपके सर इसको डिराइव किए होंगे, तो आपको फॉर्मूला बाय डिफॉल्ट आपको याद रहना चाहिए बेसिकली। अगर याद भी नहीं हुआ तो ऐसे वाले प्रॉब्लम जैसा आपको मुश्किल लग रही है ना, तो यू नीड टू यूज द डायमेंशनल मेथड एनालिसिस। यार ये पूछ रहा क्या है, और कुछ हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं क्या विद ऑप्शंस, सो दैट वी कैन गेट द क्वेश्चन आंसर इन द शॉर्टेस्ट टाइम। या कभी भूल गए derivative type of equations, so you can just use the method of dimensions to do see that one. Just see that LHS must be equal to RHS, then that will give me the answer for that one. Clear? See this question. If f is equals to a into root x plus b into root t, okay, where f is your force, x is your distance, and t is your time, okay, then the dimensions of a by b is, so जल्दी से बताओ dimensions of your a and b क्या रहेंगे? If f is equals to a into root x plus b into root t, where f is equals to force, x is equals to your distance. Anyone? जब कभी भी आप डायमेंशंस ऐड करते हो ना बेटा, LHS मस्ट बी इक्वल टू योर RHS, यानी फोर्स का डायमेंशन जो है ना, F मस्ट बी इक्वल टू a into root x होना चाहिए। Similarly, F must be equal to b into root of your t होना चाहिए। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए। फोर्थ का डायमेंशन आपको मालूम है, एम एल टी पावर माइनस टू इज इक्वल्स टू ये डायमेंशन ऑफ एक्स मींस एल एल पावर 1/2, that means a is equals to m l t power minus 2 divided by l power 1/2, so that will come out for me your m into l power 1/2 t power minus 2. The same way here, m l t power minus 2 is equals to b t power 1/2. So b डायमेंशन कितना हो जाएगा, b is equals to m l t power -2, ऊपर जाएगा तो प्लस 1/2 प्लस हाफ, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 5/2, ठीक है ना। अब पूछा क्या राइट नाउ, a by b, so a divided by b will be equal to how much, so it is m l power 1/2 t power -2 divided by ml t power minus of 5/2. M gets cancelled right now here, so this value will be equal to your l power, ऊपर +1 है, l के ऊपर चले जाएगा तो -1 हो जाएगा, so this value will become for me -1/2 and t power -2 ऊपर जाएगा तो +1/2 यानी t power 1/2, and this value will be equal to under root of your t divided by l. Am I clear? Am I clear? चलिए, very good.
लिख लिया ना बेटा? ठीक है, चलो और एक छोटा सा ट्रिक दे रहा हूं मैं, टू फाइंड द मिक्सचर of any thermodynamical process or parameter. वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, जनरली क्वेश्चंस बनते हैं इस पे से, और बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ भी चुके हैं, हाउ टू कैलकुलेट द मिक्सचर प्रॉब्लम्स। ठीक है ना? देखो मैं क्या ले रहा हूं, व्हाट आई एम डूइंग इज, जो भी क्वांटिटी दे रहा, मान के चलो x ऑफ योर मिक्सचर is always equals to summation of your x into y divided by summation of your y. ये याद रख लीजिए, x can be anything, some mixture is equals to summation of your x into y. xy क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए कभी भी, xy is equals to some constant. ठीक है ना? x is nothing but the parameter whose value is to be found after mixing. And y is the second variable which is been changing with respect to x. ये याद रख लीजिए right now. So here x क्या है बेटा? Right here. Here x is equals to parameter whose value is to be found after mixing. And what is y? Y is your second variable. Y is your second variable which is changing with your x. ठीक है ना? चलो अब यहाँ पर क्या ले सकता हूँ, मान के चलो let n1 and n2 are number of moles. ठीक है ना? n1 and n2 are your number of moles of gases of molar masses, मान के चलो कैपिटल M1 एंड कैपिटल M2, और उसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मान के चलो F1 एंड F2। ठीक है ना? इसी तरह से लेट CP1 एंड CP2, ठीक है ना, एंड सिमिलरली CV1 and CV2 will represents me what? Molar heat capacities. इसी तरह से S1 and S2 are specific heat capacities, okay, of maybe liquids or gases, जो भी है, okay? And T1 and T2 are the temperatures at which these liquids are between mixing. ठीक है ना? T1 and T2 are your temperature at which liquids are mixed. ठीक है? एक बार देख लो मैं क्या बोल रहा हूँ, कभी भी मिक्सचर के प्रॉब्लम्स कर रहे हैं आप लोग, so what you do is use the formula summation of x into y divided by summation of y. x and y क्या है बेटा? कांस्टेंट है। जैसे मान के चलो x is a parameter whose value is to be found after mixing, and y is the second variable which is been changing with respect to your x. जैसे n1 n2 है number of moles, m1 and m2 है molar mass, and f1 and f2 are degrees of freedom. इसी तरह से cp1 cp2 CV1 and CV2 are molar heat capacities at constant pressure and constant volume. S1 and S2 are specific heat of the liquids of gases, and T1 and T2 are the temperature at which the liquids have been mixed. अब इसके बेसिस पे मैं आपको समझाता हूँ कि लिखना कैसा फॉर्मूला अपने को, बेसिकली हाउ डू यू राइट द फॉर्मूला रिलेटेड टू दिस वन बेसिकली। ठीक है ना? इसको देखो, अब जैसा मुझे टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर लिखना है, टेम्परेचर ऑफ योर मिक्सचर लिखना है, that is equals to summation of your TMS divided by summation of your MS. मतलब ये हो गया T1 M1 S1 plus of your T2
M2S2 divided by your M1S1 plus of your M2S2, ठीक है ना। और जिस तरह से अगर नंबर ऑफ मोल्स में लिखना है अपने को टेम्परेचर, T ऑफ योर मिक्सचर इज इक्वल्स टू summation of your N into T divided by summation of your N, ठीक है ना। So I can write here right now T into your N मान के चलो, this one I can write this one as T into your N. This one is T into your N. So that means this value will become how much for me beta? N1 T1 plus of your N2 T2 divided by N1 plus of your N2, ठीक है ना। उसी तरह से मोलार मास का मिक्सचर लिखना है मुझे, मोलार मास का मिक्सचर लिखना है। So that value will be equal to how much beta? Summation of your M into N divided by summation of your N. That means I can write this one as of your M1 N1 plus of your M2 N2 divided by your N1 plus of your N2, isn't it? The same way, like Cp of mixture I need to write. Cp of mixture is equals to summation of your Cp into your N number of moles divided by summation of your N. So that value will be equal to your N1 Cp1 plus of your N2 Cp2 divided by your N1 plus of your N2. The same way Cv of mixture, Cv of your mixture will be equal to, I can write this one as of your N1 Cv1 plus of your N2 Cv2 divided by your N1 plus of your N2, isn't it? Same way gamma of mixture, gamma of mixture will be equal to how much? Summation of your Cv into gamma divided by summation of your Cv, or gamma लिख लीजिए basically, isn't it? This is your summation of your gamma into Cv divided by your summation of your Cv. So that will be equal to gamma into Cv1 plus gamma 2 into Cv2 divided by Cv1 plus of your Cv2, ठीक है। अब जनरली हम लोग क्लास में क्या लिखवाते हैं, गामा ऑफ मिक्सचर ऐसा निकालने के लिए करवाते हैं, लाइक से N1 प्लस ऑफ योर N2 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ योर मिक्सचर -1 इज इक्वल्स टू N1 divided by gamma 1 minus 1 plus of your N2 divided by gamma 2 minus 1. This is जनरल मेथड हम लोग क्लास में लिखवाते हैं। अब जब डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्म ला रहा है तो यूज द समेशन ऑफ योर x into y divided by summation of y, that will give me the answer for that. Done. इस पे एक क्वेश्चन देख लो एक बार जल्दी से करके दे दी। एक्चुअली थर्मोडायनामिक्स आप लोग को एग्जाम के लिए है, इसलिए मैंने जरा टॉपिक शॉर्टकट ले लिया। मान के चलो मेरे पास एक क्वेश्चन है, 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक 1 mole of monoatomic gas gamma is equals to 5/3 is mixed, okay, with ये वीक पूरा हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशंस ही करेंगे बेटा, यूनिट्स एंड डायमेंशंस करेंगे एंड बेसिक मैथमेटिक्स पे ही क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। ये वीक पूरा अपना यूनिट्स एंड डायमेंशंस ही रहेगा एंड एरर्स रहेगा एंड इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे, स्क्रू गेज भी कराऊंगा मैं, फिर आपसे प्रॉब्लम्स भी करवाऊंगा थोड़ा कॉन्सेप्ट करवा के। ये वीक पूरा बस इतना रख लीजिए कि पूरा यूनिट्स एंड डायमेंशंस के न्यूमेरिकल्स हो जाए, पीवाईक्यूज हो गए, और रोज मेरे साथ एक 5-10 क्वेश्चन पे भी एटलीस्ट हम ट्रिक्स के साथ या कुछ अच्छे वाले क्वेश्चंस कर ले तो आपका रिवीजन हो जाए बेसिकली, ठीक है ना। अब ये मैं थर्मोडायनामिक्स लेकर आ रहा हूँ कि कल परसों का एग्जाम था तो थोड़ा बहुत फॉर्मलेस रिवीजन हो जाते बोल के करवा रहा हूँ। 1 mole of monatomic gas gamma is equal to 5/3 is mixed with your 1 mole of your diatomic gas. 1 mole of your diatomic gas. Diatomic gas gamma की वैल्यू कितनी होती है? 7/5. Then the value of gamma per mixture कितना होगा बताइए जल्दी से anyone? I'm giving you the options 1.45, 1.54, 1.5. The fourth option is 1.67. Okay. So fast.
Very good. I'm using this formula beta. X of your mixture will be equal to summation of your xy divided by summation of y. यहाँ पर x की वैल्यू क्या है बेटा, गामा है, एंड y की वैल्यू क्या है यहाँ पर CV है. For monoatomic gas, you know that for monoatomic gas CV की वैल्यू कितनी होती है, 3/2 times of R. For diatomic gas CV की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 5R divided by 2. ठीक है ना. सो गामा 1 की वैल्यू कितनी हो गई, गामा 1 की वैल्यू हो गई 5/3 गिवन, and gamma 2 is equals to 7/5. You know the formula for gamma of mixture, अभी लिख पाया था. Gamma of mixture is equals to your gamma 1 into CV1 plus gamma 2 into CV2 divided by your CV1 plus of your CV2. So 5/3 into your 3/2 times of R plus 7/5 into 5/2 times of R divided by, this will be 3/2 into R plus of your 5/2 times of your R. ठीक है ना. तो इसमें 3 चले जाएगा, 5/2 प्लस 7/2. देख लीजिए कितना आ रहा है, 3/2. वेरी गुड. 3/2 दैट मीन्स 1.5. ठीक है ना. ये आप जनरल मेथड से भी कर सकते थे बेटा, n1 n2 के फॉर्मूला भी लेके यूज कर सकते हैं. n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1, वो लगा के भी आप गामा की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं बेसिकली. ठीक है ना. ये तो मैंने जनरली करवा दिया. ये भी पूरा अपना यूनिट्स एंड डायमेंशंस ही रहेगा बेटा. यूनिट्स एंड डायमेंशंस, एरर्स, लीस्ट काउंट, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स, इसी पे न्यूमेरिकल्स करेंगे बेसिकली. एंड विल ट्राई टू सी दैट एटलीस्ट 30-40 प्रॉब्लम्स आर बीन डन इन दिस वीक, एंड आई आल्सो गिव यू सम असाइनमेंट्स रिलेटेड टू दैट वन. देन उसके बाद विल ट्राई टू गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक. 16 वीक का टारगेट है, तो 16 वीक्स के अंदर हम लोग एटलीस्ट एक चैप्टर में से 40 क्वेश्चंस अच्छे वाले करें. आपको शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह मिल गए तो विल ट्राई टू वर्क इट आउट ऑन दैट वन. ठीक है ना बेटा. किसी कोई डाउट्स? रोज इवनिंग अभी कल से और थोड़ा सिस्टमेटिक होगा, क्योंकि आज तो मैंने जल्दी जल्दी स्टार्ट कर दिया ऐसे ही. तो आपको EMI असाइनमेंट्स वगैरह भी दिया जाएगा, और थोड़े अच्छे वाले और टिप्स ट्रिक्स अगर कुछ मिल जाए तो वो इस पे भी मैं आपको वर्कआउट करवा दूंगा. और यूनिट्स एंड डायमेंशंस एरर्स पे हम लोग एक 40 क्वेश्चंस का एक PDF फाइंड, आई विल ट्राई टू डू इट आउट, सो दैट वी विल डू दैट ऑल 40 क्वेश्चंस. फॉर्मूलेस वगैरह आप लोग पढ़ के आइए. कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह चाहिए तो प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, और उस चैप्टर के मैं आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट्स होगा तो रिवीजन करवा दूंगा. ठीक है. आप तो सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास ही थी, ज्यादा सीरियस नहीं थे. अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वंस आई गेट ए कंप्लीट एनालिसिस कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग, उसके हिसाब से विल ट्राई टू वर्क इट आउट. एंड असाइनमेंट्स वगैरह भी देना है, ग्रुप वगैरह बना लेके आपको असाइनमेंट्स वगैरह भी दिया जाएगा उसके अंदर एक्सक्लूसिवली. एक बार जो एनरोल हो जाएंगे इसके अंदर 100 स्टूडेंट्स का जब बैच बन जाएगा इसके अंदर, एंड देन विल ट्राई टू वर्क इट आउट कि ये वीक के अंदर ये असाइनमेंट करना है और इसको कंप्लीट करना है. देन उसके वही बच्चों को 60 ग्रांड टेस्ट के लिए भी एनरोल कर देंगे बेटा, फॉर डूइंग द प्रैक्टिस फ्रॉम द मंथ ऑफ योर अप्रैल. अप्रैल नहीं, मार्च की एंडिंग से ही स्टार्ट कर लेंगे. मार्च अप्रैल पूरा ग्रांड टेस्ट में ही रहेगा मोस्ट प्रोबेबली. अभी तो दिसंबर है, दिसंबर जनवरी फरवरी, ये 3 मंथ्स में मैक्सिमम हुआ तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का अपन रिवीजन करेंगे 13-14 वीक्स में या 16 वीक्स में, जैसा समझ में वैसा. ठीक है. और 2-3 दिन में और थोड़ा सिस्टमेटिक होगा बेटा, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग है. मैं अभी बिजी शेड्यूल में था, सो आई कुडंट एबल टू प्रिपेयर द स्लाइड्स वगैरह. तो विद इन अनदर 2-3 days विल ट्राई टू मेक इट सिस्टमेटिक वे, सो दैट एवरीथिंग गोस इन ए सिस्टमेटिक मैनर, एंड एक प्रॉपर असाइनमेंट्स वगैरह भी मिल जाए आप लोग. ठीक है ना. चलो, देन टुमारो अगेन एट 9:45 to 10:45, 1-2 दिन इधर उधर होगा, देन विल मेक इट आउट. ठीक है. चलो, टेक केयर बेटा, बाय.